Hello students. Now the next topic which we are starting is development of of endosperm. Clear? The number one thing. As we know, endosperm is a developing tissue which provides nutrition to the developing embryo. So actually endosperm development takes place at the first फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होगा बजाय कि एम्ब्रियो के, ताकि एम्ब्रियो को व्हेन इट विल स्टार्ट टू ग्रो इट विल टेक डायरेक्टली न्यूट्रिशन फ्रॉम डेवलप्ड एंडोस्पर्म. क्लियर? सो first of all, primary endosperm nucleus will repeatedly divide by the same mitosis type of division, and it will produce, the nucleus will divide, will produce primary endosperm. First of all, cell will produce by covering of cytoplasm. Now primary endosperm will divide by mitosis and produce endosperm tissue. Triploid why? Because every cell contain three, and means three pair of, three nucleus or three chromosome. So triploid endosperm tissue is produced. The triploid endosperm tissue means group of cell. Correct? The cells of these tissues are, means ये जो cells हैं they are filled with nutritive material और minerals और nutrients से filled हैं. Correct? So ये प्रोवाइड करवाएंगी न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. नाउ द एंडोस्पर्म इज ऑल्सो थ्री टाइप: फ्री न्यूक्लियर, सेल्युलर एंड हेलोबियल. द फर्स्ट इज फ्री न्यूक्लियर. इन दिस फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, what happens actually, this primary endosperm cell divide repeatedly and without cell wall formation, means continuously free nuclear division takes place, cell wall formation नहीं होता है. Correct? That is called free nuclear endosperm, and the number of these free nucleus are different in different plants. Later from the boundary cell wall formation takes place, means सबसे पहले सेंटर में बहुत सारी सेल्स रिपीटेडली बनती जाएंगी, and at the last from the peripheral side cell wall formation will takes place, and the free nuclear endosperm will convert into cellular endosperm. Correct? As we all have eaten coconut, जो कोकोनट का जो पानी है जो अंदर का, which we say that it is very nutritive and it contain much many minerals, it is free nuclear endosperm. and जो उसके बाहर का जो white kernel होता है जिसे हम खाते हैं, that is called cellular endosperm. मतलब जो उसका कोकोनट का वाटर है वो तो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंड द white kernel पार्ट जो है इट इज अ सेल्यूलर एंडोस्पर्म. अब इस एंडोस्पर्म में भी कुछ केसेस डिफरेंट हैं, लाइक सम ऑफ द प्लांट्स, इन सम ऑफ द प्लांट्स जो एंडोस्पर्म है इज टोटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, और इट इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो टोटली. क्लियर? मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को टोटली कंज्यूम कर रहा है, एंडोस्पर्म को. करेक्ट? तो दैट वी कैन से नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट्स. एग्जाम्पल मेनली लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं लाइक पी, बीन एंड ग्राउंडनट, दे ऑल थ्री आर लेग्यूमिनियस प्लांट्स. क्लियर? So these types of plants are called non-endospermic plants, in which endosperms is completely consumed by developing embryo. And endospermic means जो developing embryo है वो totally consume नहीं करता है, और थोड़ा सा एंडोस्पर्म बच जाता है जो कि that will later utilize during the seed germination.
क्लियर? जो कि थोड़ा बहुत बच जाएगा वो एम्ब्रियो ने तो यूज किया नहीं, सो दैट एंडोस्पर्म विल बी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन. एग्जांपल जो मेनली ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट है लाइक कैस्टर यानी अरंडी का तेल एंड कोकोनट, these are called endospermic plants. Clear? Once take a look again. Post fertilization events. नंबर 1 इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा सो दैट व्हेन द एम्ब्रियो starts to develop it will get nutrition from angiosperm. मतलब पहले से ही इसके लिए एक environment और nutritive material prepare करके रखा जाता है. So primary endosperm nucleus at first it will produce cell wall around it and convert into primary endosperm cell. Primary endosperm cell divide by mitosis, produce triploid because it's triploid in nature endospermic tissue. Each cell of this tissue is filled with of nutrient or minerals and that will provide nutrition to the developing embryo. Endosperms are of 3 types. So first of all, there will be a continuously nuclear division without cell wall formation, that is called free nuclear endosperm. Later, the cell wall formation takes place from the boundary, produce a cellular endosperm. So a example of that is coconut का जो पानी है अंदर का, that is the example of free nuclear endosperm. and उसके जो साइड का जो white part है that is called cellular endosperm. In some of the plant जो endosperm है is totally consumed by developing embryo, that is called non-endospermic plants. Example mainly the leguminous plants, pea, bean and groundnut, and some of are called called endospermic, in which endosperm is not totally consumed by developing embryo, so that some of the part is utilized during the seed germination. Example जो oil producing plant है like castor and coconut. Now the second procedure is development of embryo.